Okay, today we will discuss about ecological succession. Before that, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ notes ପଠେଇବା ପାଇଁ 3-4 ଜଣ ହିଁ notes ମତେ ପଠେଇଲା personal number ରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର notes ପଠେଇଗଲା ଆଜି ପଠେଇଦବ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି Okay, let's discuss what is ecological succession. तो आमे इकोसिस्टम रो ऑलरेडी 3टा पार्ट पढ़ी सालेनी एटा 4th नंबर पार्ट पढुचंती इकोलॉजिकल सक्सेशन ठीक अछि तो आमे फर्स्ट बुझिबा व्हाट इज सक्सेशन लेट्स स्टार्ट व्हाट इज सक्सेशन सक्सेशन इज ए डायनामिक characteristics of a community dynamic means changeable changing okay succession is a changing characteristics of a community सब बेले एटा चेंज होता है a community goes changing until a balance is established between community and environment गोटे कम्युनिटी केतेबेले पर्यंत चेंज हुए जेतेबेले गोटे बैलेंस न आसी जाए कहा भितर कम्युनिटी आ ता सराउंडिंग भितर कम्युनिटी आमे मींस आमे गोटे स्पीसीज रो कम्युनिटी नै परिबा गोटे प्लांट कम्युनिटी नै परिबा ह्यूमन कम्युनिटी नै परिबा नले अदर्स एनिमल कम्युनिटी नै परिबा से कोच कि गोटे कम्युनिटी माने population with its surrounding को हमें कहबा कम्युनिटी देखो जे कम्युनिटी टा केते बेला पर्यंत चेंज हुए जेते बेला पर्यंत कम्युनिटी आ ता सराउंडिंग बा ता एनवायरनमेंट रे गोटे बैलेंस न आसे से पर्यंत से कोन हुए चेंज हुए धर गोटे हमर कम्युनिटी अछि से सराउंडिंग रे एनवायरनमेंट अछि धर गोटे स्पीसीज रो प्लांट कम्युनिटी अछि तो से प्लांट कम्युनिटी टा केते बेला पर्यंत चेंज हबो आ पूरा सराउंडिंग प्लस सेठी जो ऑर्गेनिज्म अछि को पर्यंत चेंज हेबे जे पर्यंत से कम्युनिटी आ एनवायरनमेंट भीतर गोटे बैलेंस न आसी जाय छै ओके तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स तो मने रखो व्हाट क्लाइमेक्स टा होची जो इक्विलिब्रियम स्टेट आसी जो बैलेंस स्टेट टा आसी सेटा को हम कोन कहबा क्लाइमेक्स कंटीन्यूअस चेंज that is succession means continuous changes that is called succession in the simple word succession is the continuous changes between community and environment to establish a balanced state okay continuous changes and climate are characteristics of community but the community ro kon characteristics rahibo continuous change होतुबो से कम्युनिटी टा आउ तापर लास्ट को इक्विलिब्रियम स्टेट को क्लाइमेक्स स्टेट को ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड सक्सेशन देखिया माने कोन मु तुम कोन कहली कंटीन्यूअस सक्सेशन इज द कंटीन्यूअस चेंज एंड टू ऑब्टेन ए क्लाइमेक्स पार्ट तो हमें कोन कहउचंती गोटे कंटीन्यूअस चेंज हे कि चलतबो ए जो डायग्राम रे तमाने देखो कोन हेची फर्स्ट पायोनियर स्पीसीज माने कोन प्रथम स्पीसीज देखो ए माने हेले प्रथम पायोनियर स्पीसीज छोट ग्रास लाइक प्लांट्स ओके देन इंटरमीडिएट स्पीसीज तापर कोन हला कंटीन्यूअस चेंज हेला कि नहीं तो इंटरमीडिएट स्पीसीज असले डिफरेंट टाइप रो प्लांट असले तापर कोन हला किछि प्लांट डिमिनिश हो गले लास्ट को जो प्लांट मान रहले सेटा होची क्लाइमेक्स कम्युनिटी ओके ए टाइप रो सक्सेशन हुए माने चेंजेस आसे कंटीन्यूअस चेंजेस आसे आ एटा सक्सेशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस आ टाइम टेकिंग प्रोसेस एटा नो कि संगे संगे हे जिवो तमे सक्सेशन संगे संगे देखि परिबोनी तमे चेंजेस ता तमे संगे संगे देखि परिबो कि जदि हम स्टडी करिबा ताले हम से चेंजेस देखि परिबा इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस ओके change community what is change in community देखिबा a community is always dynamic as I said before a community is always changeable dynamic means changeable
input dynamic. Okay, then asba environmental conditions. तो ये जो changes होचे तापे responsible किए mostly environmental condition influence the living organisms present in a community, and the organism in turn also influence their habitat. तो से कुछ ये जो changes होचे, that changes or that dynamic factor or that multiple factors are environmental conditions. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन करछि गोटे कम्युनिटी ऊपर इन्फ्लुएंस पकोछि गोटे कम्युनिटी अछि गोटे कम्युनिटी रे कोन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिबे प्लांट्स होंतु एनिमल्स होंतु जे भी से कोन करिवे से एनवायरनमेंट ऊपर इफेक्ट पकेबे जोठी रहउछन्ति ता ऊपर इफेक्ट पकेबे ता सराउंडिंग ऊपर इफेक्ट पकेबे इन ऑर्डर कोन हबो से ऑर्गेनिज्म माने also influence करिवे habitat को तांका वासस्थान माने एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस पकेबे ऑर्गेनिज्म ऊपर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तार habitat बा ता सराउंडिंग ऊपर कोन पकेबो किछटा इफेक्ट पकेबो जहा द्वारा कि चेंजेस आसीबो. Thus the habitat and the component of the community keeps on changing. ସେଥିପାଇଁ ହିଁ जो habitat जो ବାସସ୍ଥାନ जो କହୁଛନ୍ତି and ସେ community ର ଆଉ ଯେତେ ସବୁ component ରହିଲେ like other organisms other living organisms ଆଉ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଉଭୟ କଣ ହେବେ keep changing continuous changing ତାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ. The process of change in the habitat accompanied by the change of vegetation one after the other is called plant succession. तो mostly हमें कौन पढ़िबा plant succession ही पढ़िबा. ओके से कहूची कि से जो चेंजिंग प्रोसेस टा रहिला जहा द्वारा कि habitat टा चेंज हबो with different type of vegetation माने different type of plant community गोटे परे गोटे जेमति मु तुमको प्रीवियस इमेज रे देखैली कोन हेची गोटे प्लांट परे डिफरेंट प्लांट चेंजेस हेची vegetation रो चेंज हेची तो सेटा को हम कोन कहबा प्लांट सक्सेशन. ओके देन डेफिनेशन पढ़वा डिफरेंट साइंटिस्ट ए जो डिफरेंट कम्युनिटी रे चेंजेस आसुची बा गोटे हैबिटेट सहित का ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रो इंटरकनेक्शन द्वारा डिफरेंट चेंजेस आसुची इंटररिएक्शन द्वारा डिफरेंट चेंजेस आसुची ताको डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डेफिनेशन प्रोवाइड करचंती. लेट्स सी फर्स्ट क्लेमेंट्स in 1916 defined succession as a natural process by which the same locality became successively colonized by different group of plants. से कहते कि जो सक्सेशन आमे कहिले that word succession सेटा हो जोडे नेचुरल प्रोसेस आ से नेचुरल प्रोसेस ता कोन होची सेम लोकालिटी गोटे ही हैबिटेट थिबो गोटे ही लोकालिटी थिबो गोटे ही प्लेस थिबो बट डिफरेंट प्लांट द्वारा से टाइम अनुसार चेंज होथिबो डिफरेंट प्लांट सक्सेसिवली सेठी कोन करथबे कॉलोनाइज्ड होथिबे दैट इज कॉल्ड सक्सेशन अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट्स. Then after that Knight in 1965 defined that succession as an orderly and progressive replacement of one community by another. तापर नाइट कोन कहले सक्सेशन टा होची गोटे प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट गोटे कम्युनिटी थिबो से कम्युनिटी आउ गोटे कम्युनिटी द्वारा रिप्लेस हो दैट इज सक्सेशन. Then from the above definition it is clear that plant community is not static, that plant community स्थिर नुहे it keep changing होता है. That is plant community is a dynamic process or is dynamic. Static माने स्थिर dynamic माने changeable. Okay so not static. Okay not static. Then it involves a regular orderly progressive and predictable change. तो हमको डायनामिक हवा पाई हेले गोटे कम्युनिटी डायनामिक केमिति होची रेगुलर ऑर्डरली प्रोग्रेसिव एंड प्रेडिक्टेबल चेंज.
तो डिफरेंट चेंजेस द्वारा ही एटा डायनामिक होची, अल्टीमेटली लीडिंग्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर। तो ए जो रेगुलर ऑर्डरली प्रोग्रेसिव एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस द्वारा वन कम्युनिटी रिप्लेस बाय replaced by another community of plant. Okay, Odom. Then next in 1971, Odom defined that succession as development of a community. से कौन कहले कि सिंपल वर्ड रे कहले कि गोटे कम्युनिटी रे डेवलपमेंट को एटा सक्सेशन कहला बाय इपी ओडम, an ecologist. इपी ओडम मने रख, इपी ओडम को मने रख हैला। ओडम बुझा पड़छ कि हाँ मैम। कुह बुझा पड़छ तो से कुछ Yes, ma'am. सक्सेशन चेंजिंग चेंजेस आसीबो जहाँ भी कम्युनिटी रे चेंज होउची सेटा को हमें सक्सेशन कहबा। जेमिति सॉइल तयारी हबाटा बहुत लॉन्ग प्रोसेस, तापर गोटे सॉइल रे प्लांट आसीबो, छोटो प्लांट, देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो प्लांट एक गोटे फॉरेस्ट हबो, क्लाइमेट सेटा से फॉरेस्ट रे कोन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट अछंती आ डिफरेंट एनिमल भी रहिबे एंड तार एनवायरनमेंट रहइबो, सेटा को हम कोन कहबा कम्युनिटी कहबा। सिंपल वर्ड रे कहै छै ताको डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन करा है। Well, succession is nothing but continuous change in an community, in a community. Okay. Okay then. Let's move to next slide. Okay. Then types of success. So types of succession है देखिबा based on the type of succession. Okay. First primary succession. तो टाइम को लेके सक्सेशन को कितने भाग रे विभक्त कराई छै, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. What is primary succession? This type of succession start on substratum where there is no living being. एटा कोठु स्टार्ट हबो जोठी कि पूरा गोटे कम्युनिटी नथिबो, किछि नथिबो, गोटे बेयर प्लेस रु. ओके, से सबस्ट्रेटम माने से हैबिटेट रे कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म नथिबो, ना प्लांट थिबो ना एनिमल थिबो, किछि भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नथिबो, केवल हैबिटेट हैला. The living organism that establish themselves from the first time on such a substratum are called pioneer or primary colonizer. हम कौन कहबा pioneer माने प्रथम, मने रख pioneer माने प्रथम start. ओके, से कुछ के गोटे बेयर लैंड जेमति कि रॉक हो किंबा डिजर्ट हो, मरुभूमि हो, से जगह रे कोन जमा प्लांट नथिबे, किछि भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नथिबो, सेटा को हम कोन कहबा प्राइमरी सक्सेशन. माने जो बेयर लैंड केही भी नथिबो लिविंग ऑर्गेनिज्म, केही फास्ट जो ऑर्गेनिज्म ता आसीबो ताको कोन कहबा पायोनियर ऑर्गेनिज्म और पायोनियर कॉलोनाइजर. The community thus formed is called primary community. से जो बेयर लैंड रे जो कम्युनिटी फर्स्ट प्लांट बा लिविंग ऑर्गेनिज्म आसे ताको कोन कहबा हमें प्राइमरी कम्युनिटी. आ से सक्सेशन को कोन कहबा प्राइमरी, से जो चेंजेस आसे ताको कोन कहबा प्राइमरी सक्सेशन. नेक्स्ट, what is secondary succession? Here the succession start on a substratum where there was living matter previously but has disappeared due to some natural calamities. तो से कोन कहूची सेकेंडरी सक्सेशन कोन? सेकेंडरी सक्सेशन होची जेमिति कि देखिबो गोटे जंगल पूरा पोड़ी दे, पूरा नष्ट हो जाय, सेठी कोनोसी भी प्लांट देख परियानी. तो बहुत वर्ष पूरा पूरा जंगल पोड़ी जाइछि सेठी गुटे भी हमर कोन लिविंग ऑर्गेनिज्म नै, किंतु पूर्वरु कोन हे सेठी लिविंग ऑर्गेनिज्म थिले, बट किछिटा नेचुरल कैलामिटीज जो फॉरेस्ट फायर हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, स्टॉर्म हो, आ कोन तमर फर्स्ट हो माने तुषारपात हो, जहा द्वारा कि सेठिकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थिले तमाने टोटली डिमिनिश्ड हो जाइछन. तो तापरे कोन हेचंती नुआ
कौन है ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर सेठी देखा है तापर कौन है कंटिन्यूअसली तापर सक्सेसिवली तांकर चेंजेस दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन कौन कहली गोटे पूरा बेयर लैंड था सेठी आगरु प्रीवियसली देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म then a organism taking place in that place is called pioneer organism then that succession is called pioneer or primary succession ଆଉ secondary succession कौन कहला एटा होची गोटे सबस्ट्रेटम जोटी की जो हैबिटेट जोटी की प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म थिले बट ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज those living organism diminish hence that habitat or that substratum replaced by new living organism and that type of succession is called secondary succession primary succession पढ़लो secondary succession पढ़लो एटा होची types of succession based on type based on type देखो एटा होची प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन न छोटो इमेज देखो प्राइमरी सक्सेशन ने कोन हेची प्राइमरी सक्सेशन ने कोन हेची पूरा बेयर लैंड ते थिला हैला तो सेठी तापर धीरे धीरे चेंजेस आसी कि गोटे क्लाइमेक्स कम्युनिटी रे पहुंची गोटे फॉरेस्ट बड़ा देखाउ किंतु सेकेंडरी सक्सेशन में कोन हबो ऑलरेडी कोन थिबो सेठी प्लांट बा लिविंग ऑर्गेनिज्म थिले बट ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज एठी आउ देखाबे एठी एटा कोन हेजिबो डिमिनिश हेजिबो तापर आउ थरे कोन हेबे छोटे छोटे प्लांट्स देखाए बा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखाबे देन नेक्स्ट से माने कंटीन्यूअस चेंज है कि क्लाइमेट कम्युनिटी देबे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन okay next so time based on time देखले एबे based on nutritional status माने तांकर पोषण अनुसार जो सक्सेशन होची चेंजेस होची से अनुसार दि भाग रे विभक्त कराई छि ऑटोट्रोपिक सक्सेशन एंड हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन in this type the dominant organism are autotrophs okay in this type of autotrophic succession the dominant organism are mainly autotrophs autotrophs means sobhaji the organism which can prepare their own food that is called autotroph and it starts in an inorganic environment जोठी inorganic matter food matters ही start he paribo because autotrophs take inorganic substance to prepare their food or to photosynthesized okay photosynthesis करिया पई से माने कोन ग्रहण करंती inorganic matters okay then heterotrophic succession एटा कोन based on nutritional status types of succession then heterotrophic succession here the dominant organism dominant किए थिबे heterotroph like our population our community आमर कोन dominant कोन हो जाउची गोटे गां रे dominant कोन human माने ओके ताले सेही कम्युनिटी को हमें कोन कहि परिबा heterotrophic here the dominant organism are heterotrophs and it starts in an organic environment where the energy and organic matter gradually decrease because heterotrophs cannot synthesize their own food they will utilize other organic matter which is produced from autotrophs that's why the organic matter gradually decreases okay then we'll see based on the habitat this is the most important type I made this based on habitat
କାହିଁକି ନା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ଲାସ ରେ ବେस्ड ऑन habitat ଉପରେ different type of succession ଦେଖିବା ओके बेस्ड ऑन हैबिटेट सक्सेशन में स्टार्ट जब सक्सेशन टा जब स्टार्ट होची सक्सेशन माने चेंजेस टा सक्सेशन माने होची गोटे बेयर प्लेस टू गोटे फॉरेस्ट होबा मेनली सेटा को हम सक्सेशन बोलते से जो प्रोसेस ऑफ चेंजेस को हम सक्सेशन बोलते तो सक्सेशन जब स्टार्ट हेतिबो एक्वाटिक हैबिटेट रो ताको हमें कहिबा हाइड्रोस्फीयर if succession starts in aquatic habitat that is called hydrosphere if succession start in xeric जदि xeric रे हला xeric माने aquatic माने पानी रे जदि स्टार्ट होची पूरा पानी पूरा थिबो जागाटा सेउठु धीरे 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 कोन हो डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस होकी गोटे फॉरेस्ट हो एटा को कोन कहबा हाइड्रोस्फीयर देन जदि xeric मरुभूमि पूरा थिबो पूरा सुखिला शुष्क एनवायरनमेंट थिबो सेउठु सक्सेशन स्टार्ट होची ताको कहबा xerosphere ओके इफ saline माने लुणिया लुणिया जगह थिबो सेउठु सक्सेशन स्टार्ट हो ताको कोन कहबा halosphere if succession starts in sandy habitat जोटी पूरा बाली थिबो ताको हम कहबा zamosphere एटा वन मार्क क्वेश्चन आसीबो मने रखो हैला and if succession start in rocky habitat that is called lithosphere lithosphere okay mate kuho succession starts in aquatic habitat is called hydrosphere. good succession start in rocky habitat is called lithosphere. succession starts in xeric habitat is called xerosphere. जणे कम पई कहउचंती आउ को मानकर पार्टी खोलुनी बॉयज मानकर तो केबे क्लास रे ना धरि के पचारिले भी से माने कहिबो ओहो एटा तो लेखा है तुमको देखाउ स्क्रीन में ओके succession starts in saline habitat is called halosphere. of good अरे क्लास रे टिके पार्टिसिपेट करो एटा तो तमर रिकॉर्डिंग होई जेतेले टिके पछरा होची क्लास रे पार्टिसिपेट करो तुम जेते ट्राई करबो पार्टिसिपेट करिया पई मन तुमको लागिबो कि तुम सेते इन्वॉल्व होचो पढा रे नले एमती मु कहूतिबे गप बेला समस्त कहूतिबे तुम सुनि दे कि पढो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सक्सेशन हमें टाइप्स ऑफ सक्सेशन देखिले बेस्ड ऑन टाइम प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन तापर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू रे देखिले ऑटोट्रोपिक सक्सेशन एंड हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन देन हमें कोन देखिले बेस्ड ऑन हैबिटेट हेलोस्फीयर xerosphere हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर हमें डिफरेंट टाइप रो कोन देखिले बेस्ड ऑन हैबिटेट देखिले सक्सेशन नाउ इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन तुमको एटा मन रखा पाई पड़े प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन there is mainly 5 steps first is nudation then invasion then competition and coaction then reaction then stabilization there is 5 steps to form a climax community. First is nudation, second is invasion, third is competition and coaction, then reaction, then stabilization. Okay. To obtain a climax community, we have to proceed through these 5 steps. Okay. First is nudation. Then invasion, then competition and coaction, then reaction, then stabilization. Okay, next class time mane what are the process and what are the steps of ecological succession? ए पांचटा समस्तिंग मुहरे थिबो
nudation, then invasion, then competition and coaction, then reaction. Last one is stabilization. Okay. Next ଆମେ ଦେଖିବା process of ecological succession. Each step ରେ ଆମେ ଦେଖିବା. Okay. First is nudation. Okay. First step is nudation. This is a process by which a bare area is created. ଗୋଟେ bare area created ଥାଏ ବା ହେଇଥାଏ ବା primary succession ଥିବ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ bare ମାନେ ଫାଙ୍କା. ଓକେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିବ ମରୁଭୂମି ନହେଲେ ଯଦି bare ନଥିବ ପାଣି ଥିବ ଧର ପାଣି ଜାଗାଟା ସେ ପାଣିଟା କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିକି ସେଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଭଳିଆ ହବ ନହେଲେ ପାଣି କଣ ହବ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଠି ଗଛ ଉଠିକି ଦେଖିବ ସେଠି କଣ ହେଇଯାଇଥିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଜାଗା ହେଲା. This is a process by which a bare area is created. So first होची कौन गोटे bare area टे created हबो जे habitat रे कोनोसी living organism नथि. The reason behind the creation of a bare area may be topographic. से जो bare area टा create हबो काहे केमिति हबो may be topographic reason द्वारा. Topographic may be soil erosion, soil erosion माने माटी धोई हेई जिबारो किबा लैंडस्लाइड कोन लैंडस्लाइड भी सिमिलर टू soil erosion कम मात्रा रे हमें soil erosion कहबा जो माटी धोई हेई जाउची लैंडस्लाइड माने पूरा धसकी जीवो तो टीवी रे देखुथबो कोन होची बड़ बड़ पूरा प्लेस गुडा को धसकी के पानी भितर पसि जाउची हैला सेटा को हम कहबा लैंडस्लाइड और volcanic activities volcanic माने अग्नि उद्गरणी ओके एउडा कहूची टॉपोग्राफिक इफेक्ट्स और क्लाइमेटिक इफेक्ट्स द्वारा ही परिबो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज क्लाइमेटिक माने मे बी ग्लेशियर्स माने कोन बरफ जो थिबो ता द्वारा ही परिबो नले स्ट्रॉम झड़ तूफान द्वारा किबा फॉरेस्ट माने कोन तुषारपात द्वारा किबा फायर द्वारा ओडा होची क्लाइमेटिक एक्टिविटीज जहा द्वारा कि बेयर लैंड गोटे एरिया रे बेयर लैंड तयारी हिजो माने देखिबो कोन हिजो अग्नि उद्गरणी हिजो जदी गोटे जगह रे से जगहटा कोन हिजो पूरा पूरा बेयर हिजो कि नै सेठी जहा भी गच्छ थिबे मरि जिवे जदी एनिमल्स थिबे मरि जिवे पूरा बेयर हिजो चला. और बायोटिक एक्टिविटीज माने anthropogenic activities mainly anthropogenic माने मनुष्य कृत pollution द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एग्रीकल्चर पई हो आमे कोन करचंती पूरा से एरिया को नष्ट कर दोचंती पूरा पॉल्यूटेड कर दोचंती तो से एरिया कोन हेबो बेयर माने किछि भी प्लांट सेठी ग्रो कर परिबे तो सेटा पूरा बेयर लैंड हेला. तो फास्ट होची न्यूडेशन bare land तयारी हेबाकू आमे कोन करा फास्ट स्टेप इज न्यूडेशन. तो एटा मेनली नेचुरल एक्टिविटीज द्वारा ही थाए और सम बायोटिक एक्टिविटीज द्वारा ही थाए. ओके नेक्स्ट स्टेप इज invasion. Okay, next step is invasion. This is the process in which new species reach and establish themselves in that bare area. तो हमें न्यूडेशन ले देखले bare area created हेला. invasion ले माने कोन इन्वेंट करी इन्वेंट माने तमे गोटे जिंस भितरे पसु माने से bare land अछि bare land रे गोटे न्यू स्पीसीज एंट्री कला माने गोटे न्यू स्पीसीज का डिफरेंट गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म सेठी डेवलप हैला. दैट इज कॉल्ड invasion or entry. Invasion or simply we can call it entry. There are three substages of invasion. Invasion रो कोन अछि तीनटा substage अछि. फर्स्ट अछि माइग्रेशन माने फर्स्ट नुआ स्पीसीज टा आसीओ माने कोन आउ कोठी
गोटे स्पेसीस टे आसीबो जेमति कि पोलिनेशन हबो कि मंजीटे उड़िके आसिके पड़िबो नले गछ केमति हबो गोटे न्यू स्पेसीस आसीबो जदि केमति हबो स्पेस रु तो आसीबोनी ना बाय विंड हो मेनली बाय विंड द्वारा कोन आसीबो पोलन ग्रेन आसीबो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन आसीबो आखिरे माटरे पड़ले सेटु कोन तयारी हबो गछ तयारी हबो ओके तो फर्स्ट माइग्रेशन हबो ट्रांसफर माइग्रेशन मींस in simple word transfer then एसिस हबो एक्सिस बा एसिस तमे कर परियो ओके सेठी कोन एसिस माने स्टेबलाइज हबो सेठी से बढ़ी पारुची कि नाही ओके then aggregation then गोटे प्लांट रो डिफरेंट गोटे प्लांट रो बहुत गुडे प्लांट हबा आ एग्रीगेट हेबे फर्स्ट गोटे गछ उठिथिबो तमे सिंपली देखिबो गोटे गछ तमे देखिथिबो कॉर्ड लिप्स जानछ कि नहीं भृषंग पत्र कॉर्ड लिप्स तो कॉर्ड लिप्स कोन हेतिबो से गछ देखिबो गोटे गछ उठिथिबो जे जोठी मु तुमको सिंपल एग्जांपल दोछि काई ना सेटा शीघ्र तमरो से एग्जांपल ता तुमको देले तुम जानि परबो गोटे गछ उठिथिबो किछि दिन परे देखिबो से गछटा जेतले बड़ हबो ता साइड रे से छोटे गछ उठिबो देन से छोटे छोटे गछ आउ थरे बढ़ी के बड़ गछ हेबे सेटा होछि एग्रीगेशन ओके this is the three substage of invasion then देखिया what is migration the substage of invasion ना देखिया so this is the entry of propagules like seed or spores जेमति कहली कि pollen grain हो किबा different type of seeds हो by agent like air or water in the new area air द्वारा हो water द्वारा से new bare land रे entry करियो okay that is migration then access once the propagules reach the new area जेतेबेले से जो spores होंतु बा seeds होंतु new area रे पहुंचिले they germinate माने germinate करिवे as they are to survive in the new environment ताको पई सेटा होची new environment new climate तो कोन करिवे से मानको survive करिया पई पड़िबो most plant fails to survive obvious कथा बहुत गुडे प्लांट कोन हेबे फेल मारिवे सर्वाइव करिया एबे हमहु लेकी पूरा ठंडा अंटार्कटिक जो एरिया अछि सेठी छाड़ दब सेठी बंची पाउना दिलो तो आमे बंची परिबा ना आमे किछ दिन पर मरजिबा आमे सर्वाइव करि परिबा नाही किंतु हमहु जते टिके ठंडा जगह को नेकी आ जेमति कि यूरोपियन कंट्री को आमे हमको नेकी आमे कोन करबा सर्वाइव करि परिया कि नहीं करि परिया आमे स्वेटर जैकेट मारि के आमे सर्वाइव करि परिया तो सेमति बहुत गुडे प्लांट न्यू एरिया रे सर्वाइव करि पारन किंतु किछि प्लांट सेठी सर्वाइव करि गले दिस प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली जो माने सक्सेसफुली से न्यू एनवायरनमेंट रे सर्वाइव करि गले से माने को आमे सेही प्रोसेस ता को कहला एक्सिस the first sorry I forgot that if okay there is a mistake the first seta okay the first species that established itself is called pioneer जो first species मतलब pioneer कहते माने कोन first or primary species the first species that established itself is called the pioneer species एटा हम कोन करा जो species ता first establish हबो बा first successfully survive करबो in that new environment is called pioneer species then the third substage of invasion that is aggregation increase in the number of the individual after a species is called aggregation the first migration hela transfer hela pollen grain by seed by propagules by spore jahabi yaha द्वारा कोन हला सेकंड स्टेज रे कोन हला जर्मिनेट हवा परे किछि प्लांट सर्वाइव कर परिबा आ किछि प्लांट सर्वाइव कर परिबे जो टाइप ऑफ प्लांट से फर्स्ट सर्वाइव कला ता कोन कला पायोनियर then the pioneer plant increase in their number that is called aggregation okay aggregation process okay let's go to third step that is competition and coercion what is competition and coercion
There is always a competition among or within the species for nutrition and space. Okay, तो देखो से जगार कौन है एबे प्लांट्स माने कौन है गले ग्रो करी गले तापरे कौन हबो कंपटीशन हबो सर्वाइव करिया पई सेठी जहा न्यूट्रिशनल सोर्स अछि बा स्पेस पई कौन हबो स्पीशीज भितरे बा ऑर्गेनिज्म भितरे कंपटीशन हबो ड्यू टू कंपटीशन देयर इज कोएक्शन कंपटीशन हेले कोएक्शन हबो कोएक्शन माने गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे ऑर्गेनिज्म सहित कंपटीशन कला माने दी जनकर एक्शन हमको देखिया पई मिले in coaction one influence the other leading to survive of the fittest कोन दी जनक भितर कंपटीशन ने कोएक्शन हबो माने दी जन को सहित डिफरेंट एक्शन देखिबे जे सर्वाइव करिवो दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आमे जानि छथि लामार्किज्म पढि छथि कि नहीं डार्विनिज्म इवोल्यूशन में कौन अच्छी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी अधिक अडॉप्ट करि परिबो से एनवायरनमेंट को अधिक फिटेस्ट हेतिबो से एनवायरनमेंट पाई जी ही सर्वाइव करिबो अदर ऑर्गेनिज्म विल डाई और हैव टू डिमिनिश अलगा ऑर्गेनिज्म माने कौन है कंपटीशन करि परिबेनी आ कंपटीशन करिके हारि तो जी जितबो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो कौन हबो तापरे कंपटीशन हबो देन कोएक्शन भी हबो then fourth step that is reaction is reaction the organisms that have established themselves and are competing for nutrition and space influences the environment and bring in a change in the surrounding तो जो ऑर्गेनिज्म माने कंपटीशन करूचंती बा कॉम्पिटिटिव हेतिबे बा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हेतिबे तमाने कोन करिवे सराउंडिंग रे डिफरेंट चेंज आनी ओके such a process is called reaction तो तांका सराउंडिंग सहित तांकर रिएक्शन हबो तांकर न्यूट्रिशनल वैल्यू तांकर स्पेस पई हो तो एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करिवो तो ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करिवो तो से प्रोसेस टा को कोन कहबा रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म ता सराउंडिंग सहित जहां भी रिएक्शन करूची बा जहां भी इंटरैक्ट करची ता कोन कहबा रिएक्शन reaction causes a change or destruction of one community and establishes another community तो कोन हबो गोटे कम्युनिटी लोप पाई देन आ गोटे कम्युनिटी द्वारा से एस्टैब्लिश ओके जेमति के तमरो से जागा रे गोटे टाइप रो पायोनियर तमे प्लांट पाउथलो से प्लांट को रिप्लेस करिवे अलगा टाइप प्लांट तापर किछ दिन पर देखिवो से एरिया रे कोन अलगा रिसोर्सेस मिलिबो हेले अलगा कम्युनिटी रो प्लांट्स के जर्मिनेट बढ़िबे तो से माने रिप्लेस कर देबे फास्ट ग्रो प्लांट माने पायोनियर प्लांट माने को रिप्लेस कर देबे each such stage that appears due to reaction is called serial stage or changes serial माने changes change हबो different plant as plant community as different plant community देखाय धीरे धीरे काहे कि ना देखिबो गोटे फॉरेस्ट लास्ट को जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तमे देखिजो से क्लाइमेक्स कम्युनिटी कोन गोटे टाइप रो छथिबे ना डोमिनेंट गोटे टाइप रो जेमिति कि हमें गोटे नबा मैंगो ट्री रो मैंगो ट्री रो एनवायरनमेंट सेठी कोन मैंगो ट्री अधिक अधिक ता सहित छोट छोट गच्छ भी थिबे बुद्धा जातीय गच्छ भी थिबे ओके तो गोटे टाइप रो सेटा डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज ता सहित अलगा प्लांट स्पीशीज भी थिबे okay this is reaction that is the fourth step of process of oxidation then let's go to the last step that is stabilization or climax step it is the final stage in which the community that has developed is not replaced and is called the climax community जोड़ा कि होछ गोटे फाइनल स्टेज से स्टेज द्वारा एटा होची लास्ट स्टेज जहा द्वारा कि
तापरे आउ किछि कोन पाइबानी डेवलप्ड कम्युनिटी पाइबानी that is forest. Mainly forest is the climax community. Okay, let's quick view from the first. First quick view कर दवा कहीं ना आज पे नंबर एतकी तो फास्ट हुआ में let's start. Okay, ecological succession. आम्ही जानलो what is ecological succession. Okay, succession is a dynamic process. This is the most important point. Okay, then the equilibrium state is called climax. That is no further development. Climax, that is the last step of process of succession. Okay, then this is the structure of a process of succession. Then changes in community. Okay, community ta bhi or dynamic, that is changeable. तो community रे जहाँ community environment surrounding सहित organism जहाँ भी reaction करंती तो सेगुड़ा करे changes. Okay, then definition. Different ecologists gave different type of definition. Okay, E.P. Odom, an ecologist, said succession as a development of a community. Then type of succession, that is basing on time. There is two types of succession, that is primary succession and secondary succession. Primary succession starts on a substance where there is no living, किछि भी living things नथिबे, सेटा होची primary succession. Then secondary succession होची there was living matter previously but has disappeared due to some natural calamity. Okay, पूर्वरु किछि species सेठी थिबे but natural calamities जोगु सेठी किछि भी species रहिबेनी, then next new species देखाबे, that is secondary succession. Then based on nutritional status, there is two type of succession, autotrophic succession and heterotrophic succession. Autotrophic succession is that in which the dominant organism are autotroph, and in heterotrophic succession the dominant organism are heterotroph. Okay, then based on habitat, if there is aquatic succession start in aquatic habitat is called hydrosphere. If succession start in xeric habitat is called xerosphere. If the succession start in saline habitat is called halosphere. If the succession start in sandy habitat is called zamosphere. If the succession start in rocky habitat is called leaf. Okay, this is the most 5 different type of most important types of succession. Then asla process of succession. There are 5 steps to establish climax community, that is nudation, then innovation, then competition and coaction, then reaction, and lastly stabilization. Nudation, the creation of bare land, bare area is called nudation. Then invasion, the entry of new species in that bare area. There are 3 substages of invasion, that is migration, ascesis, and aggregation. Okay, migration which is the entry of seed or spores. Then ascesis which is germination and its survival. Then aggregation which increase in the number of the species. Then the third step, that is competition and coaction. The species competing for nutrition and space. Due to competition, there is coaction, which leads to survival of the fittest. Then reaction. What is reaction?
Reaction is the changes or destruction of one community and establishment of another community. चेंजेस हे पारे किबा डिस्ट्रक्शन हे पारे वन कम्युनिटी रो आ गोटे नुवा कम्युनिटी देखा लागो हम कोन करा रिएक्शन करा आ एटा का सहित हो का ऊपर डिपेंड करबो के एनवायरनमेंट आ जो ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज से डेवलप हो ओके each stage that appears due to reaction is called serial stage मने रखो this is also called serial stage serial means changing then the last step that is stabilization and or ଆମେ ତାକୁ climax step କହି ପାରିବା it is the final step in which the community that has developed is not replaced and is called climax community and କଣ କହିବି ସେଟାକୁ climax community ବୋଲି କହିବି okay thank you ତାର କିଛି question Thank you, ma'am. okay thank you ତାର କିଛି question ଅଛି ତାର କିଛି question ନାହିଁ ହଉ मते कुह एग्जाम केबे करिया तमे डेट फाइनल करो